गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अजेंद्र। कंफर्टेबल है इंटरव्यू के लिए? स्टेबल कर लीजिए कैमरा को। हेलो हाँ यस। सर, एम आई ऑडिबल? या यस यस यस। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके अजेंद्र, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। Good afternoon, sir. My name is Ateendra Agnihotri. I belong to Lucknow district of Uttar Pradesh. I have completed my secondary and higher secondary education from St. Mary's Convent Inter College, Uttar Pradesh, and my graduation from University of Lucknow in the year 2020. And I have completed my post graduation from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Uttar Pradesh, in statistics. And this is my third attempt at the interview phase of the Indian Statistical Service exam. ओके, क्या इससे पहले आप इंटरव्यू में थे? यस सर। ओके, क्या एक्सपीरियंस रहा लास्ट इंटरव्यू का? सर इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। क्या कमी रह गई, क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाए? सर हमें सर रिटर्न में ही लग रहा है कि इसलिए नहीं हुआ होगा, क्योंकि कितने इंटरव्यू में तो अबव 130 नंबर थे। कितने मार्क्स थे रिटर्न में, कितने मार्क्स थे? सर रिटर्न में 481। और इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे? सर 135। Okay. And Yatendra, first tell me what is the role and function of the Vice President of India? सर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एंड इज and he also fills in the duty of the president when the president is on leave or due to medical reasons. Okay. अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? Who is the incumbent Vice President of India? Sir, the previous was Mr. Jagdeep Dhankar, but he has resigned from the post, and till now the election is the new vice president has not been yet appointed. Okay, good. And first tell me, do you heard about the GST, Goods and Services Tax? Yes, sir. What are the recent changes made in the GST? Sir, earlier there were 4 slabs in GST, sir, at 5%, 12%, 18 and 28%, but now they have been reduced to only 2 slabs in 5% and 18%, and there is another provision given for 140% slab, but it has not been yet made official. It would be for tobacco and flights and that sort of. Okay, so do you consider BD is the same product or you are not in same product? Sir, sir, it should come in the same category as tobacco. But GST Council has been made 18% to BD. So why such changes is there? Sir, I am not aware of this. Okay, who takes such decisions to changes in the slab or tax rate? Who takes such decisions? Who is Sir, the GST Council takes the decision, which is a constitutional body headed by the Union Finance Minister. and who is a member of GST Council? Sir, the chairperson is the Union Finance Minister, and then we have Union Minister of State, Revenue and Finance, and then we also have the Minister of Finance of each of the states or their nominees in their absence. Very good, very good. Okay, so tell me about, I'm asking about related to your information technology. So what is a cache memory? Sorry, sir. Cache memory, what is cache memory? Sir, it is a internal process memory. Sir, it lies between the CPU and the primary memory, and it helps in. Sir, it stores those pages which we are recently working on. So, I think it is the fastest memory. So it is placed on motherboard, it is placed on processor. Yeah, it is the extra place. Sir, I think it is on the motherboard. I am not sure. Okay. And what is the Supreme Court verdict on stray dogs? Sir, on. Stray dogs. Yes, sir. Sir, the earlier verdict was that stray dogs had to be collected and they had to be put in shelter homes for the stray dogs. But the later on, after the protest, the verdict was changed, and they would be collected and sterilized and released from the place where they were collected.
Okay. And if I want to see the inflation rate of Lucknow, where I can find this? Sir, in UP, sir, the UP government has last week taken a decision that a shelter home for the stray dogs would be formed outside the residential areas where they would be fed and kept. No, Uh, I'm asking about the inflation rate. Suppose I want to see the inflation rate of your district Lucknow. So which document I have to prepare? Sir, inflation rate. Yes, yes, yes. District-wise inflation rate is available or not? Sir, I'm not aware about this. State-wise inflation rate is available or not? Sir, it should be available, but I have not read the document, so Have I you can. gone through any press release by Ministry of Statistics and Program Implementation? Yes, sir, I have seen. Which one? Sir, the periodic labor force survey for the July month and the first quarter was released, that I have seen, and I have seen the annual survey of industries which was released for the 23-24 financial year. And sir, I have also seen the comprehensive annual modular survey which was released for the first quarter. Sir, these are the ones I remember. Okay. What is the work of the program implementation wing? Sir, program implementation wing, sir, it monitors the 20-point programs and the member of parliament local area development scheme and also central sector projects which are worth 150 crore and above. And it also monitors the the progress of the country on 11 key indicators monthly and yearly. Okay, sir. Right. So, what is the name? Yes, yes. Ateendra. Right. Define the central value. Sir, Define central value. central values. Sir, central value can be for a data can be the mean or median or mode. Sir, it is the value around which majority of the data lies. Okay. What is the difference between average and the arithmetic mean? Sir, average is taken in a probabilistic situation where we deal with random experiment and random variables, whereas arithmetic mean is taken in a deterministic situation where we have the data and we calculate the arithmetic mean. Okay. What is the random variable? Sir, random variable is any function which maps all the values of the sample space to a real number. Okay. To a real number. Yes, sir. So the range of the random variable must be a real number or some another spaces. Sir, the codomain is the real number. The range is a function, is a subspace of the codomain. It can be countable integers also, or as well as real number also. What is the difference between continuous random variable and mixed random variable? Sir, sir, in continuous random variable, the range is the set of the real numbers, whereas in mixed random variable, it can be both a countable also and continuous range also. Okay. Define a random experiment. Sir, any experiment which is repeated under identical conditions and it results in unique, it does not result in a unique outcome, but the outcome is one of many outcomes which we know. Okay, if the outcome of a random experiment is unique, then can we say that it is considered as a random variable? Sir, it cannot be considered as a random experiment then. Okay, define degenerate random variable. Sir, a random variable which has all the mass at one point only is known as a degenerate random variable. Can you give a practical example of a degenerate random variable? Sir, if we toss a coin with heads on both the sides, or then it will be come head only, then all the mass will be at the point head only, therefore it will be a degenerate random variable. Is this experiment is a random experiment? No, sir. So if this is not a random experiment, how we deal in statistics? Sir, sir, we can be used to define the degenerate random variable, but it is not a random experiment, so we cannot calculate the probability, I think, in this case. Right. It's okay. What is the type 2 error? Sir,
So the probability of rejecting of rejecting of the probability of accepting a false null hypothesis is known as type 2 error. Okay, we minimize the type 2 error. Why not we minimize the type 1 error? Sir, I don't know why do we not. Right. What is the difference between a linear model and econometrics? Sir, in econometrics, we deal with a mathematical form of the economic theory. Suppose we have an economic theory, we give it a mathematical form in the subject of econometrics, and linear model is a sub part of econometrics. Okay, sub part of econometrics. What is the difference between strata and cluster? Sir, strata are formed such that they are homogeneous. Units within the strata are homogeneous, whereas clusters are formed with the idea that the units in the cluster should be heterogeneous. Okay, what is the difference between sample correlation coefficient and population correlation coefficient? Sir, when we draw a random sample from a population, then the correlation coefficient between the units of the sample is the sample correlation coefficient, whereas the correlation among the population units will be called population correlation coefficient. Define intra-class correlation. Sir, correlation between units of the same class is known as intra-class correlation coefficient. Sir, may I give an example? Yeah. Sir, for example, if we take members, if we want to find the correlation between weights of brothers of the same family, so in this case, both the random variable will denote weights only, so the correlation coefficient would be called intra-class correlation coefficient. Why the classical probability theory failed? Sir, classical probability theory is applicable when the experiments are equally likely, mutually exclusive, and exhaustive. But whenever the situation is such that the experiments are not equally likely, then it will fail. Okay. Can you define the statistical probability? Sir, if we perform an experiment large number of times and it results, then the limiting value of the ratio of favorable number of outcomes to the total number of outcomes will be defined as the probability of occurring of the given event. This will be called a statistical probability. Right. What is the variance? Sir, variance can be defined as difference between the expectation and the difference between observed value and the square of difference between the observed and the expected value is called variance, or it is the second central moment about mean. Okay, this is what is the moment? Sir, what is the moment? Sir, there are two kinds of moments, sir, central moment and raw moment, and it gives the deviation of the random variable from from a particular value. Okay, my question is, moments are what? Means what you understand with the moment? Suppose like a central value is a value which represents the whole data. So my question is, what is exactly the moments? Can you define the moments? Sir, exact definition I am not aware. Right. Sir. Okay, Yatendra, what is your hobbies? Sir, my hobbies are cycling and playing and watching cricket. Okay, how you justify your hobbies in daily basis? Sir, sir, on a daily basis, I regularly go for cycling for 1 hour in the evening, and cricket. Whenever there is a match, I watch those. And sir, Okay, suppose there is an IPL match, right? So, what percent of tax will be levied on the IPL match ticket pricing according to new GST changes? sir, I think it would be 18%. It should be in the 18% slab. Is it not luxury to see the IPL match in the stadium? Sir, it is luxury, but I am not exactly aware. Okay, good. And last questions. Why we consider you for a ISS officer? Tell me how you justify your selection to the ISS officer.
Sir, because sir, first because I have cleared the written examination, so I must be having some required basic knowledge which is required for the Indian Statistical Service, and uh, sir, that is only I know. Okay, So, ठीक है आपका योर इंटरव्यू हैज बीन ended. If you have any question you can ask. सर अब सर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जैसे नॉलेज की, क्योंकि टाइम तो अभी बहुत कम है, तो कुछ अगर नहीं, दो स्पेसिफिक तीन एरिया दो, बता दो दें। तीन चीज मैं बता देता हूँ, फिर सर बता देंगे। और आपका जो क्वेश्चन है, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे ना, हैव यू एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस टू इंटरव्यू, आपके नो नो थैंक यू, राइट। आपको उस रूम से बाहर निकल जाना है जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो, क्योंकि वो कुछ भी बोलेंगे निगेटिव तो काउंट करता ही है। दूसरा, आपकी ना नॉलेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक है। टाई जरूर टाई करिएगा, टाई जरूर पहनिएगा वहां पे। यस सर। और हो तो ब्लेजर पहन लीजिए, यस सर। कंफर्टेबल रहेंगे तो, क्योंकि मौसम में ब्लेजर चल सकता है। ठीक है। बाकी आपकी जो नॉलेज है ठीक है। एक बार जो एमएसपीआई की वेबसाइट है, प्रेस रिलीज आप जरूर देखिए, रिसेंट प्रेस रिलीज को देखना बहुत जरूरी है। जीडीपी का, सीपीआई का डेटा, पीएलएफएस का आप डेटा देखे भी हैं। ठीक है। तो इस सब पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। बाकी आपका, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के एस्ट्रोडॉक्स वर्डिक्ट पे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है। बाकी चीजें ठीक है, मुझे उसमें कोई नहीं है। आप ना थोड़ा जो करंट अफेयर, जैसे मैंने वाइस प्रेसिडेंट का रोल पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, शॉर्ट रखना है, ज्यादा नहीं बताना। ठीक है। और एक मेरी तरफ से सजेशन है बेटा, वैसे सब कुछ बहुत बढ़िया है। जब आप इंटरव्यूअर क्वेश्चन खत्म करता है ना और आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जवाब देना, 1 या 2 सेकंड का ब्रेक कर लिया करो। हाँ, थोड़ा सोच हाँ, के लगे, थोड़ा सोच के मतलब बता। बस मैक्सिमम 2 सेकंड, 2 सेकंड में काम हो जाएगा, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही है। अब आप पूछो, क्या पूछना है आपको। सर सर और तो कुछ नहीं पूछना था, बस यही पूछना था कि कोई अगर एक आध एरिया आप अगर बता दें, कि जैसे अभी तो हम मतलब मॉस्पी वाला ही देख रहे हैं, ऑफिशियली वाला देख रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। उस तो पे उस अब पे थोड़ा और सा वर्क कर लीजिए, और आप अपना डीएफ पे, क्योंकि आप लिख के बता रहे हैं ना हमको, डेफ पे बहुत फोकस करिए, डेफ पे जैसे एकदम। स्पेशली अपनी हॉबीज पे फोकस हाँ, करिए। बीस पे कर। अगर आप जॉब करते हैं कहीं एमएनसीज में, तो आप एमएनसी से क्विट करके गवर्नमेंट में क्यों जाना चाहते हैं, ये आप अच्छे से, बहुत अच्छे से जैसे देखें। अभी लास्ट एक क्वेश्चन को आप टेकल नहीं कर पाए, जो हम आपको क्यों कंसीडर करें, ये इसका हाँ। जवाब आपको खोजना हाँ, पड़ेगा। कि आपको आईएएस क्यों बनाया जाएगा, क्यों बनाए। राइट। तो अब सर सर आप जैसे हम सिंपली ये कर सकते सर हैं, हम जैसे पब्लिक जैसे हम सर्विस के थ्रू ट्यूशन काम पढ़ाते करना हैं। चाहते हैं कंट्री जी को। जी बेटा। सर जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब हमने डेफ में तो मेंशन नहीं नहीं किया है, नहीं, तो नहीं बोलना भी नहीं, नहीं, वो बोलना बोलना भी नहीं है, वो बोलना ट्यूशन भी उसन नहीं नहीं। है। उसमें वो आपको थोड़ा सा टफ फंसा लेंगे फिर ना। हाँ, ट्यूशन पे हाँ, क्यों लेके जाए। ट्यूशन पे क्यों लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप, नहीं सर, जैसे अगर वो पूछ लें कि 3 साल से खाली ही बैठे हो, कुछ किया नहीं है हाँ, एमएससी के तब वास्ते। आप कहिए हम टीचिंग में हैं, हम ऐसे टीचिंग में, हाँ, कहिए। तब आप कह सकते हैं हम ट्यूशन पढ़ा रहे ये हैं, फिर कोई कहेगा प्रॉब्लम नहीं। जो आप इकोनॉमिकली कैसे वायबल है, आप क्यों नहीं हाँ, अर्न कर रहे हैं, ऐसा पूछता है कई बार। पूछेगा, फिर पूछेगा, आप 3 साल का गैप है तो पूछेगा आपको कन्फर्म। पूछेगा, तो आप कहिएगा मैं टीचिंग टीचिंग करता हूँ। ठीक है। किस क्लास, किस लेवल का आप टीचिंग करते हैं। सर 8th to 12th पढ़ाते हैं, और सर बीएससी के भी बच्चे को 8 to 12 स्टेट्स। वाला ज्यादा नहीं आपको बोलना, नहीं तो हाँ कहेगा आप कहाँ एमएससी क्यों हाँ, क्यों 8 वो 10। ग्रेजुएशन वाला आप आप कहिए बता मैं सकते इसी हैं। कोर्स को पढ़ाता हूँ। हाँ, ग्रेजुएशन में भी अगर स्टैट्स को पढ़ाते क्योंकि हैं आप, तो ज्यादा क्योंकि बेनिफिशियल उसमें रहेगा। होता है क्या, आप एमएससी से डाउन होके 8 to 10 पे क्यों आ रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा नेगेटिव ठीक है। पॉइंट हो जाएगा हाँ, तो आपका। आप उसी के आसपास कहिए, आप ग्रेजुएशन वगैरह को पढ़ाते हैं बस और अगर आप ग्रेजुएशन में स्टैट्स को पढ़ाते हैं, तो वो पेपर्स जो आप पढ़ाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। हाँ, पूछ जी लेगा क्या सर। पढ़ाते क्या हैं। पढ़ाते हैं, कौन सा पेपर पढ़ाते हैं, कितने मार्क्स का आता है, तो हाँ। वो थोड़ा सा पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। बाकी बिल्कुल ठीक है। बहुत और बढ़िया है, कोई कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे आप हाँ, ग्रुप फ्रैंकली पे तो ऐड है पूछिए। ना। जी सर। हाँ, हाँ। ग्रुप पे ऐड आप रहिए, तो अगर कोई भी फिर भी क्वेश्चन है तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके या कैसे भी आप हाँ, भेज सकते हैं। राइट, बाकी बिल्कुल ठीक है आपका। फर्स्ट क्लास एकदम। कब है इंटरव्यू, किस डेट को है। सर 17 सितंबर। 17, तो अभी आपके बहुत टाइम, पास टाइम है। टाइम है आपके पास थोड़ा सा अब। न्यूज में जो चीजें आता है, न्यूज़पेपर वगैरह एक हम्म, सप्ताह पढ़ लीजिए, हेडिंग वगैरह बिल्कुल। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसे आप जी सर। जवाब उसका बढ़िया दे रहे हैं, हाँ, उसमें कोई कोई दिक्कत कोई नहीं। प्रॉब्लम। बाकी कोई भी चीज आपको पूछना हो हमसे और सर से, हाँ, तो ग्रुप पे ग्रुप आप पे पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल वगैरह भी कर सकते हाँ, हैं जो बेटा, भी कोई आपको लगे कोई उस पे तो प्रॉब्लम। पूछ लीजिए, जो भी राइट, आपको लगे। ठीक है। ठीक। जी सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द हो बेस्ट। थैंक यू सर। जाएगा।